इस शॉर्ट में मैं कुछ नीट के क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो जरा ध्यान से सुनिए। इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी नहीं है? अगर आप सब प्रॉपर्टी को ध्यान से देखोगे तो आपको ये प्रॉपर्टी नजर आएगा जो कि विच इज नॉट ए प्रॉपर्टी, दैट इज कन्वर्शन ऑफ चार्ज टू मास. Next question is the electrostatic force on a small sphere of charge 0.8 mu c due to another small sphere of charge minus 1.6 mu c in air is 0.4 Newton. ये 0.4 Newton है. What is the force on the second sphere due to first sphere? आपको न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में पता होना चाहिए. आपको न्यूटन्स के थर्ड लॉ इसमें अगर अप्लाई करोगे तो it will be in the opposite direction and the answer is D. Here, an electric field in a certain region is radially outward from origin and has a magnitude equals to इतना दिया हुआ है. तो हम ले सकते हैं electric field is equals to A R 3/2. Now, where R is the distance from the origin. Now, the charge contained in Q, we have to find out the charge in a sphere of radius R. So, from here we can get it that E of R equals to A R 3/2. Now we have to find out the charge. You know the formula of the charge, that is Q in equals to epsilon naught into E R into integration of whole of dA. Here which is equals to epsilon naught E R is A R 3/2 into area is pi r square, which is equals to 4 pi r square, which is equals to 4 pi epsilon naught A r 7/2. So this is the right option. Force on an electric dipole movement is given placed in a uniform electric field. जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तब उसका फोर्स क्या होता है? उसका फोर्स जीरो बनता है. नेट फोर्स इज जीरो, although it will exist at top, but the net force will be equals to zero. So your option C is correct option.